Hello, civil service aspirants. Welcome you all to this platform of StudyIQ. After a long gap, I am getting connected with you with an objective of making a discussion about the answer of the ethics paper asked in OPSC Civil Service Examination this year, that is 2024. ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଥିକ୍ସ ପେପରରେ ପଡ଼ିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଷ୍ଟଡି ଆଇକ୍ୟୁ ତରଫରୁ। ଏ ବର୍ଷ ଓପିଏସ୍ସି जीएस पेपर 4 अर्थात एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड पेपर रे कंपैरेटिवली भलो क्वालिटी क्वेश्चन पड़ी। ओपीएससी हैज ट्राइड टू मेक द क्वेश्चन एट पार विथ यूपीएससी रे जो टाइप रो क्वेश्चन पड़े ओपीएससी चेष्टा करिछि एथिक्स पेपर रे सेमतिया क्वेश्चन करिया पई एवं ए वर्ष एथिक्स पेपर रे 17टा क्वेश्चन पड़ी। 17टा क्वेश्चन रो 3टा केस स्टडी सेक्शन ए रे पड़ी 15 मार्क लेखा 3टा को 45 मार्क आउ सेक्शन बी रे गोटे 20 मार्क रो केस स्टडी पड़ी जार वेटेज होची 20 मार्क तेणु 45 प्लस 20 65 मार्क रो केस स्टडी पड़ी आउट ऑफ 250 मार्क्स। तेणु से सब क्वेश्चन गुड़िक विषय ए यूट्यूब क्लास जोटा आज स्टडी आईक्यू तरफ ऑर्गेनाइज होची सीटा मु डिस्कशन करूची। देख प्रथमे मु क्वेश्चन गुड़िक देखै दउची तापर हम डिस्कशन करिवा। क्वेश्चन देख ए वर्ष क्वेश्चन नंबर 1 होची एटा तापरे क्वेश्चन नंबर 2 तापरे क्वेश्चन 3 2 आउ 3 दिटा केस स्टडी 4 टा भी गोटे केस स्टडी क्वेश्चन 5 6 7 एटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन 8 9 10 11 12 12टा क्वेश्चन सेक्शन ए रे पड़ी 12टा रु तुमको 10टा क्वेश्चन करिया पई पड़िबो। प्रत्येक क्वेश्चन रो वेटेज होची 15 मार्क तेनो 10टा क्वेश्चन रो वेटेज हला 150 मार्क। तापरे ग्रुप बी रे 5टा कंपल्सरी क्वेश्चन अछि 13 14 15 13 14 15 तापरे 16 सॉरी 14 परे आसीगला 15 एटा 15 तापरे असला क्वेश्चन 16 तापरे असला 17। पेला माने ए क्वेश्चन रो आंसर गुडी को डिटेल डिस्कशन हम करिबा आज रो क्लास रे यूट्यूब क्लास जोटा स्टडी आईक्यू तरफ ऑर्गेनाइज होईची एवं ए क्लास रे मु खाली क्वेश्चन कहिबी आंसर कहिबी से कथा नुहे। आंसर तुमको पीडीएफ फॉर्मेट रे एंटर आंसर टाको मॉडल आंसर प्रिपेयर्ड बाय मी सेटा मु देई देबी तुमको। आस बर्तमान प्रथम क्वेश्चन की देखो। प्रथम क्वेश्चन पड़िला गोटे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन। द होल प्रॉब्लम विथ द वर्ल्ड इज दैट fools and fanatics are always so certain of themselves and wiser people so full of doubts. Bertrand Russell होचंती ब्रिटेन रो इंग्लैंड रो जने फिलोसोफर। से कहउचंती पृथ्वी रो सबुठु बड़ प्रॉब्लम हला बोका माने फैनाटिक्स असहिष्णु लोक माने सबु बळे तांको निजु को नै कि बड़ कॉन्फिडेंट अछंती। से मानकर कॉन्फिडेंस बहुत बेसी एवं से माने ओवर कॉन्फिडेंट को माने ना बोका माने आउ असहिष्णु
intolerant बा fanatic जो माने से माने. On the other hand, wiser people so full of doubts. Wise जो माने ज्ञानी से मानकर बहुत डाउट अछि, full of doubts. तेणु बहुत भल क्वेश्चन एटा से कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन पड़ी से पचारसी इन द लाइट ऑफ दिस कोट एग्जामिन द इंपोर्टेंस ऑफ टू क्वालिटीज. कला ज्ञानी लोक माने बहुत कन्फ्यूज्ड अछंती, तेणु यही कोटेशन को आखि आगे रखिकी एग्जामिन कर इंपोर्टेंस ऑफ टू क्वालिटीज. कौन दीटा क्वालिटी ना गोटे हला ओपन माइंडेडनेस, आउ गोटे होची इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी फॉर ए पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक सर्वेंट लगी ओपन माइंडेडनेस रो आवश्यकता अछि, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी रो कौन आवश्यकता अछि से विषय लेख. पिला माने देख, जणे लोक जदि ओपन पब्लिक सर्वेंट जदि ओपन माइंडेड हो जिवो, ऑब्वियसली से एडमिनिस्ट्रेटर लोकंक पई काम करूची. लोक सोसाइटी रे विभिन्न क्रॉस सेक्शन रो लोक अछंती. ओपन माइंडेड हो गले कौन करिवो ना ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटी टाको, ब्यूरोक्रेटिक बटलनेक टाको सी ओवरकम कर जिवो. विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न वर्गर लोकमानक पाखरु ओपिनियन सिक करिवो, सजेशन सिक करिवो. फलरे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड टाको सोसाइटी रे से प्रमोट करिवो. ओपन माइंडेडनेस जहा पाखरे अछि, ऑब्वियसली हिज और हर थॉट इज डेमोक्रेटिक थॉट. तेणु एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपन माइंडेडनेस रहिले जो ब्यूरोक्रेटिक बटलनेक थाए, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म थाए, ओपन माइंडेड ऑफिसर हो गले से कौन जो ब्यूरोक्रेसी रो रेड टेपिज्म माने फाइल रो मूवमेंट हुए, बहुत समय पड़ाए, सेटा हबो नाही. तापरे कहूची इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी माने विद्वानटे सब नम्र हवा उचित. इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी अर्थ नम्रपणिया. जदि सिविल सर्वेंट नम्र हब, तार आरोगांस रहिबो नाही, लोकों को सुनिबो, लोकों को कंसर्न, लोकों को प्रॉब्लम प्रति कंसर्न एक्सप्रेस करिवो, निजे भाबिबो नाही मु सब किछि जानिछि. लोकों को पाखरु बहुत किछि शिखियार अछि, कारण एडमिनिस्ट्रेशन टा गोटे बही नुहे जोठी सब जिंस लेखा है, प्रोब्लेम एटा सॉल्यूशन एटा. सोसाइटी इज ए बिग यूनिवर्सिटी. तेणु मनीषटे सिविल सर्वेंट पाखरे इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नम्रता रहिले सी कौन करिवो, लिबराल एटीट्यूड पोषण करिवो, सोसाइटी की ऑब्जर्व करिवो, लोकों को देखिवो, लोकों को सुनिवो एवं सेमानक संगरे इंटरैक्ट करिकी बहुत गुड़ाए प्रोब्लेम एडमिनिस्ट्रेशन ने जोटा अच्छी तार सॉल्यूशन बाहर करदबो. दिस ए जिनसट को आखि आगे रखिकी हमको आंसर लिखिया पई पड़िबो. जेहेतु एटा 15 मार्क रो क्वेश्चन, तेणु आंसर टाकू तमे 250 वर्ड रे लिखिबो. देखा आंसर ऑलरेडी मु लिखि देइछि. से कहूची बर्ट्रांड रसेल्स प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन exposes a silent crisis of our time. The loud certainty of a fool and fanatic and the quiet hesitation of the wise. In public life, where power meets people's life, this imbalance can become dangerous. जदि ए जिनसटा रहिबो ताले डेंजरस हबो सोसाइटी पाई. For a public servant, open-mindedness and intellectual humility are not only soft virtues, they are moral necessities. This is introduction. एटा moral necessities, नैतिक आवश्यकता. ए दुटा जिनस गोटे सिविल सर्वेंट पाई काहेकि एठी बुझेई देछि. ओपन माइंडेडनेस इज द एबिलिटी टू लिसन बिफोर डिसाइडिंग. किछि डिसीजन नबा पूर्व विभिन्न स्टेक होल्डर को सुनिबो. टू सी बिफोर जजिंग, जजमेंट दबा पूर्व लोकों को आगे देखिबो. टू अंडरस्टैंड बिफोर एक्टिंग, कोनोसी एक्शन करिया पूर्व आगे बुझिबा दरकार. सोसाइटी इज नॉट ए टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम विथ ए फिक्स्ड आंसर. मु कहि सारछि फिक्स्ड आंसर नाही सोशल प्रॉब्लम. जेते सोसाइटी के ऑब्जर्व करिवो, जेते लोकों को सुनिबो, सेते बेसी जिंस तमे भलो वे रे से डिसीजन नै परिबो. It is a living reality shaped by culture, poverty, gender, caste and history. A rigid officer trapped in ideological certainty may apply rules mechanically but miss justice humanly.
Open mindedness allows a civil servant to observe diverse viewpoint of the poor, the dissenting, the marginalized, and thus craft policies that are not only legal but also legitimate. It transforms governance from command to conversation. तेणु ओपन माइंडेडनेस रहिले लोकन सारे कथबार्ता करिवो तेणु कमांड सी दबनी कन्वर्सेशन कमांडटा कन्वर्ट हो कन्वर्सेशन रे सेकेंड क्वालिटी के आसले इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नम्रता अर्थ बौद्धिक नम्रता इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ओडिया अर्थ इक्वाली वाइटल इज इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी द करेज टू एडमिट आई मे बी रॉन्ग जहाँ पाखे नम्रता थी से कथा चिंता करिवो In administration, authority can easily breed arrogance, but humility reminds the public servant that no individual has a monopoly over truth. Policies can fail, data can mislead, and lived experiences can contradict official file. An intellectually humble officer learns continuously, corrects a mistake, and welcomes criticism as a tool of improvement, not an attack on ego. से कथा से चिंता करिबनी नम्र से ऑफिसर ना such humility strengthens institutions because it places truth over above pride. बुझे होची Bertrand Russell warns us that blind certainty fuels fanaticism, while reflective doubt nurtures wisdom. A public servant armed with power but devoid of doubt becomes authoritarian. जो public servant पाखरे power अच्छी किंतु doubt नहीं से authoritarian ही जीवो. One guided by humility becomes democratic. Together, open-mindedness and intellectual humility humanize the state, deepens trust, and ensure that governance remains responsive rather than rigid. Compassionate rather than coercive. Coercive माने बाध्यबाधकता करिवा. In the end, good administration is not about knowing everything, but about knowing that one must keep learning from people, from failure, and from conceit. बुझी होची तेणु एडमिनिस्ट्रेटर टा जदि नम्र हब से लोकों पाखरु शिखिबो फेलुअर रु शिखिबो विवेक रु शिखिबो ओके दिस इज ऑल अबाउट आंसर 250 वर्ड रे आंसर मु लिखि देछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के आसो पिला माने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन टा आगे पढ़ो से कोची राम एंड श्याम आर ट्विन ब्रदर्स रेज्ड इन द सेम फैमिली राम और श्याम दी भाई गोटे परिवार रे जन्म होइचंती दे बोथ स्टडी इन द सेम स्कूल राम इज ए ब्राइट स्टूडेंट एंड एक्सेल्स एकेडमिकली राम एकेडमिकली एक्सेल करुछि श्याम इज नॉट गुड एट स्टडीज बट इज कीन लर्नर अदरवाइज माने पढ़िया पई तार आग्रह अछि इंटरेस्ट अछि त से हार्ड वर्किंग श्याम लेटर इन लाइफ Ram clears a competitive civil service exam and joins government service in a senior position. Shyam blooms. Shyam कौन कला ना Shyam blooms as a successful businessman. With a few years, Shyam has grown rich, owns a mansion, बड़ा building राजप्रसाद भलिया building करछि and lives in a life of luxury. Ram, who is an honest civil servant, receives a modest salary and cannot afford the luxurious lifestyle enjoyed by his brother Shyam. Ram successful है civil service रे तेणु सी गोटे मॉडेस्ट लाइफ सैलरी तार जी ऑफिसर से इनकम जी बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस मान इनकम तेणु राम कौन कर गोटे मॉडेस्ट लाइफस्टाइल तार अच्छी श्याम किंतु लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन कर ओके कलीग्स एंड फ्रेंड्स ऑफ राम कैजुअल माने प्रश्न कर हिम टू टर्न करप्ट एंड मेक मनी ये देख सोसाइटी आम मटेरियलिस्टिक सोसाइटी रोचे कंपेरिजन चली बर्तमान राम भल पाठ पढ़ुला सिविल सर्वेंट किंतु तार लाइफस्टाइल ता भाई श्याम भलिया नुहे तेणु बर्तमान तार जी कलीग तार फ्रेंड से माने कहते करप्ट हो जा
तो भाई तोठू भल पाठ न पढ़ी भी एते बढ़िया लाइफ मेंटेन कर तू भल पाठ पढ़ी मूल्य कौन है। राम however remains convinced that he is a servant of the public and his duty is to serve the nation and people selflessly। रामर किंतु कन्विक्शन अच्छी सी कहूँ नहीं मु तो पब्लिक सर्वेंट मु लोक सर्विस दबा मो ड्यूटी करवा नेशन प्रति सेल्फलेसली दैट इज माय ड्यूटी। हिज फ्रेंड्स डिसमिस हिज आर्गुमेंट तार सांग माने ता आर्गुमेंट को डिस्कार्ड कर दउछन आज इम्प्रैक्टिकल आइडियालिज्म बुझनी एटा बेकारिया कथा ए खाली आदर्शवाद कथा कहूछु एथर किछि हुए। विथ whom do you agree and why? Would a handsome increase in salary of public servant be an appropriate response to the problem of corruption in bureaucracy? Discuss। से कहूँ राम कन्विन्स्ड अच्छी तार चाकरी रे जदि एते लग्जरियस लाइफस्टाइल से श्याम भाया मेंटेन करि पाउनी से कहूँ ना मोर ड्यूटी है लोक सर्विस दबा मु दउछि मु खुशी अच्छी मु चाहूनी कंपेयर करूनी राम मो सान भाई श्याम सांगरे। लोक कहउछन तू खाली बेकार आदर्शवाद कथा कहूछु तू भल पाठ पढ़ी भी किसी करिपारनु जेमति तो भाई करछि। से पचाउछि प्रश्न तमे कहा संगरे एग्री हबो काहेकि एग्री हबो तमे भाबुछ कि सिविल सर्वेंट बा पब्लिक सर्वेंट कर दरमा बढ़ई देले करप्शन देशरू कमी जीव। पिला माने देख ये प्रश्नटी जो 2 नंबर प्रश्नटी ओपीएससी एथरक पचारिछि बहुत भल प्रश्न पचारिछि किंतु ए वर्ष क्वेश्चन रो लिमिटेशन होछि ये क्वेश्चन टाकू आमे थियोरी हिसाब रे लिखि परिबा ए क्वेश्चन टाकू आमे केस स्टडी हिसाब रे लिखि परिबा किंतु सेटा तमे हठात प्रथम क्वेश्चन टी थियोरी सेकेंड क्वेश्चन टा केस स्टडी की थियोरी तमे बुझी परिबनी तेनो जे जेमती लिखिबा आंसर होछि ठीक आंसर लिखिले मार्क मिलिबो तमे थियोरी पेपर हिसाब रे लिखि परिबो ए क्वेश्चन टी की बा केस स्टडी हिसाब रे लिखि परिबो मु दीटा को वे रे लिखि देछि कना यूपीएससी रे कोन होछि से लास्ट को रखि दउचन सेक्शन बी टा केस स्टडी तेन तुम जानीगल सब गुड़ा केस स्टडी ये से कौन कर मझे मझे केस स्टडी पूरे दूसरी हठात तुम जो फ्लो चलती थियोरी क्वेश्चन फ्लो ता भीतर हठात माइंड स्ट्राइक न करि पारे जे एटा केस स्टडी की एटा थियोरी क्वेश्चन तेणु जी जमती लिखले भी उत्तर ठीक है आंसर होची मार्क ठीक मिल। देख एटा को आगे मु थियोरी हिसाब रे आर आंसर दे दोची थियोरिटिकल क्वेश्चन हिसाब रे ए क्वेश्चन टा कोन हेची ना एठी कंपैरिजन होची रामर श्याम सांगरे पिला माने राम सिविल सर्वेंट रेस्पेक्टेबल सिविल सर्वेंट ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट एवं जी की करेज ऑफ कन्विक्शन अच्छी तार सी चिंता करुच्ची ना मु लोक सर्विस जोगाऊँ देश को सेवा जोगाऊँ तेणु सी ता पोस्ट को ता पोजिशन को लेकिन रेस्पेक्ट ताको मिल। श्याम इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग श्याम तार बिजनेस कर सक्सेसफुल होती तेणु श्याम रेस्पेक्टेबल काम करुच्ची राम भी रेस्पेक्टेबल काम कर कंपैरिजन बिटवीन राम एंड श्याम इज अनएथिकल रामर कंपैरिजन श्याम संगे हेनी कारण पिला माने देख राम को श्याम संगे कंपेयर करवा अर्थ होची गोटे जज को गोटे एडवोकेट संगे सक्सेसफुल एडवोकेट संगे कंपेयर करवा संगे कहीं पिला माने जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दरमा पाउचंती जहा गोटे सक्सेसफुल एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज रो मास सारा रो दरमा जहा सुप्रीम कोर्ट गोटे सक्सेसफुल सुप्रीम कोर्ट माने लॉयर रो गोटे घंटार ब्रीफिंग होची सेतिक टंका ता माने तमे कोन कहबो जज इज डिवोइड ऑफ टैलेंट एंड एडवोकेट इज फुल ऑफ टैलेंट कंपैरिजन हुए सेम कैटेगरी लोकंग भितर अलग अलग कैटेगरी लोकंग भितर हुए ना बुझे होची तेणु सी पचार तुम क्या संगे एग्री हम तुम निश्चित एग्री हम राम संगे कारण राम ता ड्यूटी बुझी ता रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेशन बुझी एवं राम करप्शन करूना से तुम एवं से एथिकली राइट अच्छी लीगली राइट अच्छी से तुम ता संगे एग्री हम तुम एग्री हम ना श्याम राम पाखे कम पैसा अच्छी कारण जनरली दुखी लोक संगे मनीष कांधु कांध मिले दिए से एग्री हेबन तुम एग्री ये राम संगे हम कारण राम जहा करिछि ठीक करिछि एथिकल राइट जस्ट प्रॉपर एंड लीगल एक्शन इज राम्स एक्शन से तुम ता संगे एग्री हम बुझे होछि सेटा को लिखि देछि देख एठी
ए प्रश्नर उत्तर ऑलरेडी मु लिखि देछि देख I agree with Ram not because he is non-affluent or idealist but because he is right. Ram understands the true meaning of a public service. A civil servant is not meant to compete with businessmen in wealth but to compete with his own conscience every day. ता विवेक संगे ताको कंपैरिजन करबा उचित मु काली जहा थिली एथिकल आज एथिकल अछि तो सेटा कंपैरिजन होबा उचित. Sam's luxury is reward of risk. Sam कहीं की luxurious life मेंटेन करछि कारण से बिजनेस करछि. बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी. से रिस्क नहीं छी जे रिस्क नहीं से रिवार्डेड हुए. राम तो भलो पाठ पढुतला सिविल सर्वेंट हला. सिविल सर्वेंट रो लिमिटेड दरमा से कोन कहबो कि एई मास रे बिजनेस रे एई मास रे कोटिए आर मास रे गोटिए टंका भी न होई पारे. ता पर मास को 10 कोटी होई पारे. किंतु सिविल सर्वेंट करो फिक्स दरमा सेटा से कहछि. Sam's luxury is the reward of risk, innovation and enterprise. Ram's modest life is the price of trust placed by millions of citizens. Comparing the two is like comparing a judge with a trader. Both are respectable but their moral lenses are different. बुझियोछि तापर कहूँ करप्शन पिला माने से पचार दरमा बढ़े देले करप्शन कमी जीव कि देख गोटे हैंडसम दरमार आवश्यकता अच्छी किंतु दरमा बढ़ी गले जदि करप्शन कमी जाता ताल तो ऑफिसर दरमा अधिका क्लर्क दरमा कम पियन दरमा कम तमें कौन कह करप्शन खाली क्लर्क कर ऑफिसर करना तेणु दरमा बढ़ीबाटा गोटे सॉल्यूशन नुहे किंतु कम दरमा हेले किछि लोक कहिबे आम कम दरमा पाउछु सेथिमे आमे दुर्नीति करछु बुझियोछि एटा लिखिबो करप्शन में गिव कंफर्ट बट इट साइलेंटली स्टील्स सेल्फ रेस्पेक्ट. एटा करप्शन टा कथा पड़छि राम जहाँ करछि ठीक करछि बोली कि मु जस्टिफाई करछि. करप्शन में गिव कंफर्ट बट इट साइलेंटली स्टील्स सेल्फ रेस्पेक्ट पब्लिक फेथ एंड नेशनल फ्यूचर. Ram's friend called his integrity impractical, yet history shows that nations collapse not because officers were honest. देश सब भांगी जाइछि सभ्यता सब नष्ट हो जाइछि जे ऑफिसर माने दुर्नीति मुक्त थिले सेथिपय नेशन भांगी नाही. ऑफिसर जोठी दुर्नीतिग्रस्त होइछि सेठी सभ्यता विलोप घटिछि सेटा म कहूछि. हिस्ट्री शोज दैट नेशंस कोलैप्स नॉट बिकॉज ऑफिसर्स वेयर ऑनेस्ट but because they were not. Idealism without action is weak, but idealism with courage becomes character. Ram's stand proves that ethics is not outdated, it is simply uncomfortable for the corrupt. बुझियोछि तापरे salary increase कथा आसिला. Regarding salary increase, a handsome pay rise is necessary but not sufficient. Adequate salary ensures dignity, reduces vulnerability, and remove the excuse of survival based corruption. बुझिला. However, corruption is not born only from low income, it is born from greed, social pressure, and weak accountability. Many highly paid officials across the world are still corrupt, while many modestly paid officers remain honest. Therefore, salary reform must be supported by strong vigilance, transparent system, ethical training, swift punishment, and moral leadership. Corruption is not just an economic issue, it is a moral disease. नैतिक अवक्षय घटिले नैतिकता रोगग्रस्त घटिले मनुष्य दुर्नीति करे. इन कंक्लूजन, Ram represents the quiet strength of the republic. His honesty may not build a mansion but builds nation. बड़ा कोठा तैयारी न करि पारे तार honesty और integrity देश को तैयारी करूछि. A civil servant's true wealth lies not in luxury but in the ability to sleep peacefully with a clean conscience and an upright spine. बुझिला. एमती आंसर लिखिबा 250 वर्ड रे लिखि दैछि. बहुत केयरफुली वर्ड गुड़ा को सिलेक्ट करके लिखी. एमती आंसर लिखा चेष्टा कर सो दैट जहाँ हाईएस्ट मार्क आसो ओपीएससी रे तमें सिक्योर कर.
एटा आमे थ्योरी हिसाब रे गोटे थ्योरी बोली के प्रिज्यूम करके थ्योरेटिकल क्वेश्चन तार आंसर एमती लिखिले सेम क्वेश्चन नो आंसर आउ गोटे वे रे लिखा जाई परिबो प्रिज्यूमिंग इट एज ए केस स्टडी आसिले कोन लिखिबो प्रथमे लिखिबो इंट्रोडक्शन 30-40 वर्ड रे इंट्रोडक्शन लिखिबो तापरे लिखिबो कोन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड तापरे प्रश्न जहाँ पचारछि तार उत्तर दबो लास्ट को कंक्लूजन लिखिबो सेटा भी मु लिखि देछि देखो आंसर अनादर आंसर एज ए केस स्टडी बोली के प्रिज्यूम करी तार आंसर मु लिखिछि इंट्रोडक्शन देखो इंट्रोडक्शन रे लिखिली द केस कंट्रास्ट टू पाथ्स Sam's wealth through business and Ram's modest life of integrity as a civil servant. It raises question of duty, morality and temptation of corruption in a society driven by material success. केमिति कारण राम रो कलीग आ फ्रेंड्स कहउछन तू एते भलो पाठ पढ़ी कि कोन करलु अरे भलो पाठ पढ़िलु ऑफिसर हेलु मैन ऑफ इंटीग्रिटी हेलु ऑफिसर ऑफ ऑनेस्टी हेलु एटा तो बड़ रिवार्ड किंतु नाही ता पैसा संगे भाई रो पैसा संगे कंपेयर करिक ता कहउछन ता नामे जानछन सोसाइटी रे मटेरियल सक्सेस को प्रायोरिटी दिया होछि तनो मटेरियल सक्सेस पछरे गोडे की किछि लोक जो मानकर नैतिकता सबल नाही दुर्बल अछि से माने करप्शन करछन सेटा मु लिखिली इंट्रोडक्शन रे बर्तमान आस एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड इंटीग्रिटी वर्सेस पर्सनल गेन राम पाखरे इंटीग्रिटी अच्छी लोक कहउछन नाही तू मटेरियल सक्सेस पछरे गोडा पब्लिक ड्यूटी राम तार सेल्फलेसली पब्लिक लगी सर्विस दउची लोक चिंता करछन तू भलो पाठ पढ़ी किछि करि पारलुनु सेटा टेम्पटेशन वर्सेस मोरल करेज एई जगह रे पैसा पछरे गोडे की मनुष्यटा मोरल करेज हरई पारे करप्शन एंड सोसाइटल नॉर्म्स बेले बेले करप्शन टा सोसाइटी रे हुए प्रेशर पड़ी की सेटा मु एठे लिखिछि तम देखि दबो एटा हे मु लिखि देछि देखो चूजिंग ऑनेस्टी ओवर इजी फर्स्ट हला इंटीग्रिटी वर्सेस पर्सनल गेन चूजिंग ऑनेस्टी ओवर इजी वेल्थ रिफ्लेक्ट कमिटमेंट टू मोरल प्रिंसिपल public duty civil servant have a responsibility to serve society selflessly temptation and moral courage peer pressure challenges ethical resolve corruption and societal norms material inequality can create moral dilemma for honest individuals ए जिनस सब आसुछि तापर कोची values of selflessness true success is measured by ethical conduct not only wealth तापर आंसर टा मु ऑलरेडी कहि सारछि सेटा एठी लिखि देछि आई एग्री विथ राम integrity is the cornerstone of public service wealth cannot replace the dignity trust and social impact that come from serving the nation succumbing to corruption may provide short term comfort but erodes self respect public trust and moral fabric of governance a handsome increase second जो थला salary बढ़िले a handsome increase in salary can reduce financial pressure that sometimes push officers towards corruption however it is not a complete solution ethical behavior depends on values accountability and culture within the bureaucracy transparent system strict enforcement of anti-corruption laws citizens oversight and moral leadership are equally important. Incentives can support honesty, but they cannot replace internal moral conviction. Society must celebrate integrity as much as wealth, showing that selfless service is a higher achievement. Ram's choice reflects long-term ethical vision benefiting not just himself but the nation he serves. तापर conclusion को 30 वर्ड रे लिखि दबो corruption is a symptoms of weak ethics not just low pay integrity moral courage and commitment to public welfare define true success far beyond material wealth and comfort okay सरी गला नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा पिला माने
नेक्स्ट क्वेश्चन के जीवा पूर्व स्टडी आईक्यू तरफ गोटे अनाउंसमेंट करुच्ची स्टडी आईक्यू रे मु पढ़ाऊँगी सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर ता संगे जीएस रो जीएस पेपर 1 रे पढ़ाऊँगी सोशल इश्यूज जो थ्रू 100 मार्क रो क्वेश्चन पढ़ुची ता संगे जीएस पेपर 4 एंटायर पेपर मु पढ़ाऊँगी एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड ता संगे इंग्लिश एसे पढ़ाऊँगी अपार्ट फ्रॉम दैट मु इंटरव्यू बा भाइवा भोस भी कंडक्ट करुच्ची तमें जदि मो गाइडेंस रे पढ़िया चाहूच ताहले मोर कोड SKS लाइफ यूज करके स्टडी आईक्यू रे जॉइन करि परिबो। आस बर्तमान मु 17 नंबर क्वेश्चन की जाउची सेटा को भी हमें थियोरेटिकल क्वेश्चन बोली कि लिखि परिबा तार आंसर एवं सेटा को हमें केस स्टडी हिसाब रे भी तार आंसर लिखि परिबा दीटाकर आंसर अलग अलग हबो सेटा मु एठी लिखि देछि जस्ट गोटे मिनिट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटा करसी एथरक ओपीएससी से कहूची ए डॉक्टर विथ एक्सपर्टाइज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट गोटे डॉक्टर रो एक्सपर्टाइज अच्छी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कम्स अक्रॉस 5 डिफरेंट पेशेंट्स नीडिंग ऑर्गन डोनेशन 5टा पेशेंट का संस्पर्श रे आसी जहाँकर ऑर्गन दरकार अच्छी दीज पेशेंट्स बैडली नीड 5 वाइटल बॉडी ऑर्गन्स 1 ईच टू सर्वाइव 5टा अलग अलग ऑर्गन ए 5टा पेशेंट को दरकार अच्छी तेणु सी 5टा पेशेंट का संस्पर्श में डाक्तर जनक आसिले द डॉक्टर मीट्स ए परफेक्टली हेल्दी पर्सन एंड विदाउट ऑब्टेनिंग हिज कंसेंट रिमूव्स 5 organs from his body and transplant the organ in his 5 patients thereby giving them the gift of life। जड़े डाक्तर 5 जन रोगी संस्पर्श में आसिले 5टा अलग अलग ऑर्गन दरकार थिला सब खराब हो जाइए तापर डाक्तर जनक 6 लोक संस्पर्श में आसिले जी कि पारी हेल्दी अच्छा सबू ऑर्गन गुड़ा भलसे काम करुच्ची से लोक को न पचारिकी ए डाक्तर जनक कौन कले से लोक को न पचारिकी डाक्तर जनक कौन कले ना तांकर ए लोकर 5टा पार्ट नहीं कि 5टा रोगी धीरे लगेदेले न पचारिकी when question डाक्तर को तापर पचरा हला when question the doctor claims his action to be completely ethical as he saved 5 lives by sacrificing just 1 life डाक्तर कहउछंती मु 5टा ऑर्गन भल लोक पाखरु काढी नेली किंतु 5टा रोगी दिहरे ऑर्गन को फिट कर देली तेणु 5 जन तो बंचिले आ कौन जड़े लोक मरीगला कौन अच्छी माने एमती आर्गुमेंट करुँच आर्गुमेंट तुमको लगुच इंटेलेक्चुअली भारी टेम्पटिंग लगुच 5 को बंचई जन को मारदेले आ कौन से कथा कहते है बहुत भल क्वेश्चन एटा ओपीएससी करछि जेमती यूपीएससी क्वेश्चन भलिया लगुच क्वेश्चन he quotes the utilitarian theory of ethics given by philosopher Jeremy Bentham that the Jeremy Bentham कहला utilitarianism that the highest good of highest number is the essence of an ethical action। डाक्तर कहते जेरेमी बेंथाम कर जो क्वांटिटेटिव यूटिलिटारियानिज्म अच्छी से दृष्टि मु ठीक करी कारण जन को मारी देछि 5 जन को बचई डू यू एग्री विथ दिस आर्गुमेंट ऑफ द डॉक्टर तमे डॉक्टर करे आर्गुमेंट संगे एग्री हो कि गिव योर रीजन पिला माने कोनोसी परिस्थिति रे हमें एग्री हेई परिबा नाही जेरेमी बेंथाम कही नाहती जे मारी दे कि जन को आ बहुत लोकंकर हेल्प साहाय्य कर एक कथा कही नाहती डाक्तर प्रथमे क्राइम करूचंती लोक को मारी दउचंती हेल्दी लोकटा को एवं से आर्गुमेंट करूचंती कोन 5 को बंचैली जन को मारिली केन मारिबाटा क्राइम कोनोसी क्राइम की एथिक्स जस्टिफाई करिवो नाही तापरे भी एटा क्वांटिटेटिव यूटिलिटारियनिज्म की भी मीट करि परिवो नाही कारण मेडिकल साइंस रे कंसेंट अछि जे कंसेंट न नै कि कहार ऑर्गन तमे नै परिवो नाही ऑटोनॉमी अछि प्रत्येक मनुष्य को तार कोनोसी तापर कोनोसी एक्शन करिवा पूर्व तार मतामत नबा उचित मनुष्य को तापर आमे जदि पकई दबा कोन कैटेगोरिकल इंपरेटिव इमानुएल कैंट कर
Kant कहते treat human beings as end in themselves, not a means for an end. ଏଇଟା କ'ଣ गोटे लोक जी हेल्दी लोकटा तार बॉडी कौन सी स्पेयर पार्ट दुकान करथिला ना कौन गाड़ी रो स्पेयर पार्ट दरकार दुकान को जाओ स्पेयर पार्ट किनी आनी की लगी दियो हेल्दी लोकटा कौन स्पेयर पार्ट करी दुकान करी बसीची डाक्टर जीव ता पाखरु ऑर्गन सब चोरी करी आनी ताको न पचारि की तेनो कोनोसी पॉइंट दृष्टि एटा ठीक जिंस नुहे बुझियोची सेटा में देख म लिखि छै एठी एटा को हमें दीटा वे रे लिखि परिबा थ्योरी हिसाब रे लिखि परिबा केस स्टडी हिसाब रे लिखि परिबा थ्योरी हिसाब रे देख लिखि दिस केस लुक्स अट्रैक्टिव at first sight because numbers favor the doctor 5 lives are saved 1 life is lost but ethics is not simple arithmetic I do not agree with doctor's argument utilitarianism as given by Jeremy Bentham talks about maximum happiness of maximum people, but even Bentham never meant happiness at the cost of crossing human dignity, consent, and justice. When a healthy person is killed without consent, society may gain organs, but it loses its soul. Atma society dhans hi jibo. First, means matter as much as end. Means jetiki important, end setiki important. डाक्तर मीन्स खराब 5टा लोक को बचाइवाई जनक पाखु चोरी कले न जन कि कनसेंट न नहीं पाखु ऑर्गन सब काढ़ी आनले तेणु मीन्स एंड इक्वाली इंपोर्टेंट सेविंग लाइफ इज नोबेल बट किलिंग एन इनोसेंट पर्सन deliberately is murder and unethical means cannot be washed clean by a good outcome. If the logic is accepted, this logic is accepted, then any innocent person can be killed or sacrificed whenever a large number benefits. Ethics then becomes dangerous power, not moral guidance. Second, consent is the heart of medical ethics. The doctor violated the principle of autonomy. A human being is not a storehouse of spare parts. Treating him as a means, not an end, goes against Kantian ethics and basic human rights. A society that allows forced sacrifice will soon live in fear, not trust. Third, long-term consequences destroy utilitarian justification. कहना काली सकाळे आउ के डाक्तर पाखु आसीबेनी कहबे एटा चोर डाक्तर आ पाखु गले सब ऑर्गन खोलिकी नहीं कि लगे दबा आउ का पाखरे बुझी होची तेनो लॉन्ग टर्म रे कोनोसी रोगी आउ हॉस्पिटल को आसीबेनी सेथर लोककर सी जो कहूची डॉक्टर जनक आर्गुमेंट करूछती जे मु बहुत 5 को बंचेली जन को मार देली किंतु काली 5 कोटी लोक आउ आसीबेनी हॉस्पिटल को बुझी होची Third, long-term consequences destroy utilitarian justification. If doctor starts killing healthy people for the organ, patients will fear hospital, not trust them. Social happiness will collapse. Rule utilitarianism. दी प्रकार utilitarianism अच्छी. Act utilitarianism, rule utilitarianism. Rule utilitarianism जोटा समस्त प्रति applicable. Rule utilitarianism also rejects this act because if such a rule becomes common, overall suffering will increase. Fourth, law and morality overlap here. The doctor's action or act is illegal. Ethical governance requires harmony between law and morality and compassion. Civil service exists to protect the weakest, not to calculate whose life is cheaper. Finally, true ethics balances utility with justice, compassion with conscience. Mahatma Gandhi rightly said that means are as important as ends. Saving 5 lives by destroying 1 innocent life creates a moral vacuum, not moral victory. Therefore, the doctor's argument is intellectually tempting but morally hollow. Ethics is not about choosing who should die, but about ensuring
that no one is sacrificed without choice. A civilized society saves lives without losing humanity. बुझेला एटा गोटे आंसर आउ गोटे आंसर टाको आमे केस स्टडी हिसाब रे लिखिबा सेम जिंस लिखिबा आगो क्वेश्चन जहा 2 नंबर क्वेश्चन रे कहितली कोन इंट्रोडक्शन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्वड तापरे आंसर जहा पचारची क्वेश्चन तापरे कंक्लूजन देखो सेटा लिखिछि इंट्रोडक्शन द केस प्रेजेंट्स a moral dilemma where a doctor sacrifices one life to save five, invoking utilitarian ethics. It raises fundamental questions about consent, human dignity, and the boundaries of ethical reasoning in life and death situation. Ethical issues involved. कौन आदरे ethical issues सब आसीबो? First asla sanctity of life. Every human life has intrinsic value, and no life can be treated merely as a means to an end. Second asla consent and autonomy. Respecting an individual choice over his or her body is a cornerstone of medical and ethical practice. Justice and fairness. No person should be harmed for the benefit of other without his or her permission. बेनिफिसेंस वर्सेस नॉन मालफिसेंस. बेनिफिसेंस माने जनकर लाभ करेबा, नॉन मालफिसेंस माने कहार क्षति न करे कि जनकर लाभ करेबा सेटा. व्हाइल बेनिफिसेंस प्रमोट डूइंग गुड, नॉन मालफिसेंस प्रमोट्स कॉजिंग इंटेंशनल हार्म. यूटिलिटेरियन कंसीडरेशन. maximizing overall happiness or benefit is an important ethical perspectives, but it cannot override basic rights. बर्तन आस एनालिसिस जो क्वेश्चन से पचारछि. क्वेश्चन कौन पचारले जो कहितला डॉक्टर जहा कहूछि ताकू आमे एग्री हवान ता संगरे. द डॉक्टर्स आर्गुमेंट रिलाइज ऑन यूटिलिटेरियन रीजनिंग. सेविंग 5 lives outweighs the loss of one. While utilitarianism emphasizes the greatest good for greatest number, ethics is not merely arithmetic. Taking organs without consent violate autonomy, human dignity, and the principle of non-malfeasance. एवढं सब violate होच. In medical ethics, end do not justify the means. से जो कहूछि 5 को बंचेछि जण को चोरी करछि ताको पचारि कि नहीं थिला. Consent is non-negotiable even if the outcome appears beneficial. Moreover, such an action would erode public trust in healthcare, potentially causing greater harm to society. In long run, ethical decision making requires balancing outcome with principles. Sacrificing one for 5 disregards moral law and individual rights, reducing humans to object. मनुष्य को पदार्थ हिसाब रे ट्रीट करछि से स्पेयर पार्ट जेमति दुकान. True ethical action should seek solution that preserve life without violating another's fundamental rights. तापरे हमें कंक्लूजन को पढ़ेबा. कंक्लूजन हला द डॉक्टर्स एक्ट दो seemingly utilitarian is more morally indefensible. Ethical medical practice demands respect for life, consent, and dignity. Saving life must never come at the cost of violating fundamental human rights. Compassion and principle must guide action. ହେଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି 3ଟା क्वेश्चन ମୁଁ डिस्कशन कली ଏଇ यूट्यूब सेशन जोटा स्टडी आईक्यू तरफ ऑर्गेनाइज होछि. एक्चुअली ये 5 प्रकार डिस्कशन है कारण जो तुम पड़ा 2टा केस स्टडी मुझे डिस्कसन कली थ्योरी हिसाब से कली तेणु 4टा डिस्कसन 4 प्रकार से आउ गोटे क्वेश्चन थी 5टा एमती करदेली. आउ जहाँ रहा सेटा जितेबाला नेक्स्ट क्लास हम यूट्यूब रे स्टडी आईक्यू तरफ से क्लास रे मु अलग क्वेश्चन गुड़ा जहाँ पढ़ी एथिक्स रे वर्ष ओएस परीक्षा इन डिटेल डिस्कसन करी तार भी एमती आंसर मु तुमको देदेवी. ओके तेणु wish you all the best. Thank you for watching this video. Thank you.